Hello. Hello. जी सर गोटे सेकेंड हेलो हाँ कले ना आप जॉइन करूँ आप जॉइन करूँ So we start. Yeah, it's time to start. Cognition SMT. Okay, guys, go on mute, please. All. So let's start. Last time I'm comfortable. What is plane, right? Plane का कोया? यदि वो surface ଉପରେ, right? यदि हमें दीटा point नवा, से दीटा point को यदि हमें join करिया, right? जो line असला, suppose इटा वो surface, इटा वो point नेली, इटा वो plane, इटा वो surface, right? आप रमु दीटा point नीच, right? ये surface टा वो plane, काहेंगी ये दीटा point को यदि हम join करिवी, totally ये surface over totally रहेला सी, right? So we can say this is a plane. ये surface over totally सी रहेला, तो इनको हमें कता कोई हमें plane. किंतु lucky, ठीक सुन लो. तो जो white board में लिखूँ ची, right? This is a plane. कहीं के इट हमें जो कौन सी दीरा point नहीं कि हमें join करिया, that line lies on this surface. So this surface is a plane, right? But this surface is not a plane, right? कहेंगे ये surface ଉପରେ suppose point point नहीं, ये region को join करेंगे, तो ये surface को cross करके जीवो, right? पूरा surface ऊपर रहेगा, surface को cross कर दियो,
this surface has different name. This is not a plane. This is a cylinder, right? Similarly, जदि मोटे ball नहीं, one second. Ball नहीं, अभी ball नहीं, ball. If you are able to see, right, this is a surface, right? जदि ये surface ऊपर मैं कौन जगह दीटा point लेगी, तो मोरो line line बुल्ले की कटले पड़ियो, right? किंतु जदि मैं सीधा दीटा point, एट होड़ point लेगी, और इपड़े दी तोड़ दीटा point लेगी, right? ये दीटा को जदि join करी, definitely ये ball को cross करी पड़ेगा भीतरे, ball भीतरे cross करियो, right? जदि ball भीतर को cross करी जाऊँची, then that is not a surface. Sorry, that surface is not a plane. So this surface has different name, that is sphere, right? But this is a surface. This surface is a plane because jodi na chef kon hegala. Jodi a surface upre kono jagare mu dita point nebi, right? Jodi semanu join kori, so definitely se di jaga point को join करथुआ line totally a surface upper. So this surface is a plane, right? So plane ताथ आमे कोन कहथले जे plane का कहया जे जदी गोटे surface ऊपर दीटा point नवा से दीटा point को ले straight line काटिबा जदी से straight line टा totally से surface ऊपर रहिला then that surface is a plane. तो आमे that is two dimensional space, right? एटा गोटे आर दीटा length अछि गोटे ला दैर्घ्य गोटे ला प्रस्थ जोडा दिन कहतो एटा दैर्घ्य जे दियला एटा प्रस्थ बा length and breadth जो surface रा दीटा ही dimension थिबो, right? Length out breadth, that surface is called plane, and that geometry, the geometry related to a plane, to a single plane, is called coordinate geometry or two-dimensional geometry, right? Let me check, 1 second. Okay, leave it. So I'm going to two-dimensional geometry का कोया geometry containing two dimensions length and breadth. Guys, भलारे पूरा cleanly बुझो हला. These are basic things हला. So don't underestimate it हला. And these are important concepts whatever I am telling you now. Okay. So focus on these things. पाठ तो ही जो किंतु basic जोड़ा को ना basic clear अच्छे ताको प्रथम clear करो. पाठ पढ़िया टा geometry बहुत easy, right? Coordinate geometry जब तुम पढ़ो चला, you will not face any problem. But basic clear हो. Breadth, a geometry containing two dimensions, length and breadth, is called coordinate geometry. Or two-dimensional geometry.
coordinate geometry or two-dimensional geometry. Okay. जोटे हमरो तीनटा थिबो लेंथ ब्रेथ हाइट राइट जोटे थिबो सेडा को थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से ताकू धरि जते ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस बा ताकू धरि जते सब ज्योमेट्री हबो दोज आर कॉल्ड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो घरे तमे बसचो से घरे तमे जोठे बसिचो दैट इज वन डायमेंशनल जोठे बसिचो दैट इज वन डायमेंशनल काई तार लेंथ अछि ब्रेथ अछि जो प्लेन दारे तमे बसिचो राइट that is one dimensional plane xy plane I will come to that right जदि पूरा घरटा को तुम कंसीडर करिवो that is three dimensional काई तार लेंथ अछि ब्रेथ अछि हाइट भी अछि राइट जार लेंथ ब्रेथ हाइट रहला जो ऑब्जेक्ट रो लेंथ रहला ब्रेथ रहला हाइट रहला that is called three dimensional geometry. थ्री डी भी कहा जाए एटा को टू डी कहा जाए ओके टू डी थ्री डी है ना सिंपल लिखिदेवा आम एटा ज्योमेट्री containing three dimensions guys मुझे बसिक पढ़ो सोईक पढ़ाऊँ है आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम मींस हेल्थ इश्यू डोंट माइंड प्लीज सर if required I will sit don't worry okay so don't take it any negative a geometry containing three dimensions length breadth and height is called three-dimensional geometry. Okay. So two-dimensional geometry हमें entry करिया हला. So this is basic understanding of geometry. Okay. Next, suppose Cartesian plane. What is Cartesian plane? Plane माने कौन? जार की length थिबो आउ breadth थिबो height न थिबो right? Cartesian plane means definitely हमें two dimension रे ही बात को कथा होचे right? जार की length अच्छे और breadth अच्छे. तो हमें कौन करिया? दीटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो कहिए परपेंडिकुलर लाइन भी हम कह पारे दीटा परपेंडिकुलर लाइन निकरी आमे राइट दीटा परपेंडिकुलर लाइन बा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ओके दीटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बा तमे सब जिंस जानि छ बिले म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बा ओके जोरा कि नाम दबा हमें जो माने जोठे मिसु चंदी ताहाकू कहा जाए ऑरिजिन ओ स्टैंड्स फॉर ऑरिजिन राइट जोटे मिसुचन सेटा को हमें ओ ना दे दिछे ओ माने ऑरिजिन तार्थ दीटा परपेंडिकुलर दीटा एनी दीटा परपेंडिकुलर नहीं पर्टिकुलर दीटा परपेंडिकुलर लाइन की सेटा को एक्स एक्सिस आउ वाई एक्सिस x axis और y axis you know always these are two perpendicular lines एदिरा perpendicular line जोठे मिसु चंदी ताकू सब बळे origin कहा जाए राइट तो एटा मु ना देली origin राइट so वर्तमान this plane is called Cartesian plane this plane is called Cartesian plane
बा आम लिखि पारिया बा आम लिखि पारिया a plane containing two perpendicular lines x this and y o y dash. A plane containing two perpendicular lines x o x dash y o y dash is called a Cartesian plane. तार तो माने नुह जे प्लेन एतिक रे जेतिक रे मु ड्रॉ करछि सेतिक रे नै तमे आगु को पछु को राइट ओए मामले पा ओए ये दिला का ओके सारा कौन करिया राइट एटा को हमें दीटा परपेंडिकुलर लाइन राइट एतरा परपेंडिकुलर लाइन माने चारि आडे बढ़ी पारंदी हला जत्ते बड़ होई पारे तुम जत्ते जागा रहला तुम पेपर हला गोटे पूरा तमर नोट रो गोटे पेपर को मझिरे दीटा लाइन काट दियो बा साइड रे काटो कोटे काटो बढ़ाइले से पूरा पेपर को कवर करियो राइट सो दैट टोटल पेपर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन ओके तो ये ला कार्टेशियन प्लेन कोन काहे कि हम एटा ड्रॉ करले तार किसी रूल रेगुलेशन अछि काहे कार्टेशियन प्लेन करले बर्तमान हम देखिया व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लेन right the position of a plane whatever you can say coordinate of a point sorry coordinate of a point or position of a point इले मु बारंबार कहूची कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी जेतळ तमे सब क्लास रेगुलरली अटेंड करूछ जदि मझिरे तमे मिस कलो गोटे भी क्लास देन यू विल बी इन ट्रबल you will be in serious trouble okay I will try to manage but it's your responsibility you have to go through my videos and you have to learn okay coordinate of a plane or position of a point coordinate of a point or position of a point right good point ro position kin kalia suppose it would point dia hela right suppose it would point dia hela ए पॉइंट रो पोजीशन को किंदी गाड़िया तो आमे कोन करिया सपोज मो पाखरे x एक्सिस और y एक्सिस अछि अरे यार सपोज मो पाखरे सीधा गार पड़छले x एक्सिस और y एक्सिस अछि हला एटा ओरिजिन एटा x एटा y एटा y डैश एटा सॉरी एटा x डैश एटा y डैश राइट एपट सब कोन एटा हला पॉजिटिव तुम जानी ऑलरेडी ग्राफ काटुथलो मेट्रिक क्लास रे दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस दिस नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस राइट तो जदी एठी कोनोसी पॉइंट रहिला राइट एठी जदी कोनोसी पॉइंट रहिला तो एपटे पॉजिटिव एपटे कोन पॉजिटिव एपटे पॉजिटिव राइट तो एठी जे कोनोसी गोटे पॉइंट रहिला तार कोऑर्डिनेट बा से पॉइंट रो x वैल्यू आ y वैल्यू दिजन जाको पॉजिटिव हेबे तातो पॉइंट मानु को हमें ब्रैकेट भितरे कमांड द्वारा लिखा जाए प्लस प्लस राइट इधर हमरो x टा प्लस हो y टा प्लस हो राइट बाय इमेज लिख करिया x y x टा प्लस हो y टा प्लस एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट this is called first quadrant
राइट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जेकोसी जदि आम पॉइंट नवा पॉइंट कौन कि लिखा आम पर कहवा जेकोसी पॉइंट नवा आम सी एक्स कोऑर्डिनेट तार पॉजिटिव होबो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होबो बा दिजन जाक पॉजिटिव होबो एठे एपटे एपटे किए होबो एक्सटा कोन एठे एपटे एक्सटा नेगेटिव राइट एठे एक्सटा नेगेटिव वाई टा पॉजिटिव ताथ एपटे कोन होबो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट टाइम दो बा एक्सटा नेगेटिव वाई टा पॉजिटिव एठे जदि पॉइंट नवा जेकोसी जगह में पॉइंट नेले एक्सटा नेगेटिव वाई टा पॉजिटिव जदि पॉइंट एठे नवा एपटे एक्सटा नेगेटिव वाई टा कोन नेगेटिव वाई टा नेगेटिव एक्सटा भी नेगेटिव ताथ एठे पॉइंट जाको नेगेटिव नेगेटिव हेबे राइट बा एक्सटा नेगेटिव वाई टा भी नेगेटिव राइट जदि एठे कोनोसी पॉइंट नेबी ताहिरे एक्सटा एक्सटा कोन एठे पॉजिटिव वाई टा कोन नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव बा एक्सटा पॉजिटिव वाई टा नेगेटिव right so this is called first quadrant this is called second quadrant this is called third quadrant this is called fourth quadrant right this is called fourth quadrant this is all about Cartesian plane or a point or a quadrant चारि प्रकार right x axis और y axis चारटा compartment रे divide करियो right so each compartment is called quadrant note x o x dash and y o x dash बा x axis कोई करिया लिख दी तो x o x dash और x axis y o y dash और y axis right divides the Cartesian plane in four compartments and each compartments are called quadrants right so there are four quadrants named as quadrant second quadrant third quadrant and fourth quadrant okay next sign of a point in below quadrants right one quadrant 1 बा q1 लिख देली है quadrant 1 बा q1 रे कोन हो दिजन जाक पॉजिटिव q2 रे quadrant 2 रे एक्स्ट्रा नेगेटिव वाई टा पॉजिटिव राइट 3 रे
extra negative y टा negative, right? Negative, negative. Fourth रे extra positive y टा negative, right? So this is this, right? This is this quadrant, right? And this is this quadrant, right? Negative, positive. This is this quadrant, and this is this quadrant, right? चारटा quadrant हेला हम सब से एठी पहुंच जा कोन हबे ए वाले पॉजिटिव पॉजिटिव हबे, नेगेटिव पॉजिटिव हबे, नेगेटिव नेगेटिव हबे बा पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, नेक्स्ट, what do you mean by the point x comma y in a Cartesian plane? Cartesian plane रे कोई पॉइंट कहलाटा कोन तार मीनिंग कोन? ओके, suppose this is the Cartesian plane where this is a point. का मीनिंग कोन? एक्स वाई पॉइंट एट लिखली मीनिंग कोन? आ मीनिंग है जे y एक्सिस रु पॉइंट ता जेतिकी डिस्टेंस रे रहइबो, y एक्सिस प्रति गोटे लंब काटी, x एक्सिस प्रति गोटे लंब काटी, y एक्सिस प्रति गोटे लंब काटी, x एक्सिस प्रति गोटे लंब काटी, right? So this distance, guys, don't disturb me, please. I know you are talented boys. In front of you, I am nothing. I know. Don't irritate me. So this distance is equal to this distance. It is P L, it is M L, it is N L. I am जानछु कोन? OM is equal to NP. OM is equal to NP, right? तातो जदी एठु एतिकी x हैला, जदी एटा हमरो x हैला, so we can say this is x, जदी एटा y हैला, this is y, this length is y, this length is y, this length is x. Perpendicular mu draw करछि कागु x axis को perpendicular draw करछि, y axis को perpendicular draw करछि, right? x axis को perpendicular draw कले तातो एटा x axis आकु जदी perpendicular draw कली a length रे जदी y हैला, this y coordinate is y, this y coordinate is y. जदी y axis को लंब काटी जदी x हैला ताले x coordinate हैला x. Basically if the x comma y is a point on Cartesian plane, then point 1, the perpendicular लंब, the perpendicular drawn from P, point P to x axis is y. x axis प्रति लंब गोटे पॉइंट P दियाला, बा इनडायरेक्टली हम कहबे आ पर कहबी, जदी गोटे पॉइंट P दियाला x axis प्रति जदी हम लंब काटुजी से लेंथ रा दबो तमरो y coordinate. The perpendicular drawn from P to the x axis
is y coordinate. Is y coordinate. Kahinki a length ra jaha a length ra taha, right? This is all y axis, to y coordinate koha. Similarly, the perpendicular drawn from P to y axis gives x coordinate. Gives x coordinate. Right? Example. Suppose any other point दिया है P, मुझे ये तीन लंबो काटली a length रा आसला मनो करो 3 आसला 8 तीन लंबो काटली a length रा मनो आसला 5, right? तो x axis पति लंबो काटले जहा आसुची जो length डा आसुची, right? This length is y coordinate. Y coordinate, right? Y axis पति जदि लंबो काटी जहा आसु, this is x coordinate, right? Therefore P point रो कोऑर्डिनेट कौन? P point रो कोऑर्डिनेट माने ता कोऑर्डिनेट को हमें तो x, y ब्रैकेट इते लिखुचे x एक्सिस पति लंब काटी जे जो लेंथ ता आसी जी दैट इज y कोऑर्डिनेट. तो x एक्सिस पति लंब काटी जे हमें केता आसी लेंथ रा केता आसी 3, तो y कोऑर्डिनेट हला 3. y कोऑर्डिनेट हला 3. x एक्सिस पति y एक्सिस पति जो लंब काटी जे y एक्सिस ता कोडा एटा y axis पति जो लंब काटी जे that gives you x coordinate. So x coordinate is 5. So a point रो x coordinate हला 5, y coordinate हला 3. Similar note रे जदि कहली find the distance of the point 2,7 from x-axis, y-axis, origin, distance पता right? तो point 2,7 दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहला किमी जानली 2 और 7 रे एक्स्ट्रा पॉजिटिव y टा भी पॉजिटिव, both are positive means से आसला हमरो फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? मतलब both are positive रहउची दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. जदी x -27 दिया आइथंदा, राइट? जदी -27 दिया आइथंदा तो एक्स्ट्रा नेगेटिव माने x एक्सिस रे पछपटे गलो, y टा पॉजिटिव माने y एक्सिस रे ऊपर गलो, राइट? एक्स्ट्रा नेगेटिव माने एपटे गलो, y टा पॉजिटिव माने एपटे गलो तो पॉइंट 8 रहबो -2,7 पॉइंट 8 रहबो, राइट? सिमिलरली एक्स्ट्रा नेगेटिव y टा नेगेटिव हिथंदा जदी -2 -7 देथंदा 8 रहिथंदा. दिस इज -2 -7 काहेकि एपटे एक्स्ट्रा नेगेटिव y टा नेगेटिव, राइट? जदी इमिति को हिथंदा 8 को हिथंदा तार एक्स्ट्रा पॉजिटिव हिथंदा y टा नेगेटिव हिथंदा ता तो 2 -7 पॉइंट जाको ए भले तमे आइडेंटिफाई करियो को क्वाड्रेंट रे अछि बाय लुकिंग इनटू देयर साइंस, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट रो साइन को आइडेंट चेक करी तमे जानि पारियो जे पॉइंट जाको कोठी अछि, राइट? ओके, लीव इट. मींस दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. वी विल लर्न ए लॉट, राइट? दिस इज जस्ट initial. I am giving you 100% assurance that कही कही तो मन रही होला, so you don't need to read also, it is guaranteed. Okay, so 2,7 right point टा कौन 2,7 right मु कोन करी एठू x एक्सिस पति ओटा लंब काटी, x एक्सिस पति लंब काटले कोन आसी हमरो y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट टा केते आसले हमरो 7,
right? Eta y coordinate to this is y coordinate and this is x coordinate, this is y coordinate. तो x एक्सिस प्रति लंब काटले हमर आसु y कोऑर्डिनेट, राइट? x एक्सिस प्रति जदि लंब काटली आर y कोऑर्डिनेट केते 7. सिमिलरली y एक्सिस प्रति जदि लंब काटली, राइट, दैट इज x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट केते 2, राइट? तो ए पॉइंट p टा x एक्सिस रु केते दूर रहला आंसर एक नंबर आंसर केते 7 distance, the 7 unit distance, 7 distance unit लिखा जाएगा 7 unit distance from x axis, right? 2 unit distance from y axis. And I know माने केते पिला माने ऑलरेडी तमे आइडेंटिफाई कर सारी होनी जे ए डिस्टेंस ता केते हो, राइट? आई डोंट जस्ट फॉर अ ट्रायल आई कैन चेक, यू कैन से व्हिच आ डिस्टेंस केते हो. मु ए डिस्टेंस ता मागिछि ना, एटा ओरिजिन. हु कैन से? यू आर टैलेंटेड गाइस इन माय टीम, माय ट्यूटर. Okay, fine. This is 2, right? Because this distance is equal to this distance. So this is 2, this is 2. This is 7, this is 7. Now who can say what is this distance? Pick up here. Pythagoras theorem manage. This is O, this is P, this is M. So triangle OPM. Compile. OP square is equal to OM square plus PM square, right? It implies OP is equal to root over OM square plus PM square. That is root over OM square kete 0 square plus 7 square root over, that is 4 plus 49, that is 53 here. This is the distance OP. हम तीन दिया distance पढ़ेला. Question point दिया, question दिया इतना. जे ए point x axis रु केते distance रछु, y axis रु केते distance रछु, z axis रु केते distance, sorry